Ninth question is the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. राहुल और हारून की एजेस का रेशो है 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. 4 साल के बाद उनकी जो एजेस का सम करेंगे तो 56 years हो रही है. What are their present ages? तो उनकी अभी प्रेजेंट में एज कितनी है? हमें उनकी प्रेजेंट एज मालूम करनी है. उन दोनों की एजेस का रेशो मालूम है. 4 साल के बाद जो एज होगी उसका सम मालूम है. इस बेस पे हम उसकी प्रेजेंट एज मालूम करेंगे. Now we solve this. Let me solve this question. Given the ratio of Rahul and Harun's ages is 5:7. This is given. Let, तो हम सपोज करेंगे, let there means Rahul's and Harun's present ages be 5x to 7x. राहुल की 5x and हारून 4 years later. Rahul's age be 5x plus 4 years. 4 years later, Harun's age be 7x plus 4 years. According to the condition, later the sum of their ages will be 56 years. यानी 4 साल के बाद जो दोनों की एज होगी उसको सम ऐड करके 56 years हो रही है. मीन्स 5x plus 4 years राहुल की एज प्लस हारून की एज 7x plus 4 years is equal to 56 years. 5x plus 7x 12x plus 4 plus 4 8 years. 8 is equal to 56. Therefore 12x is equal to 56 minus 8. Transposing 8 to RHS side. 12x is equal to 56 minus 8. Borrow 110 from here. It will become 4. It will become 16. 16 minus 8 is 8. So it will be 48. Therefore, x is equal to 48 upon 12. 12 1 is 12. 12 4 is 48. Therefore, x is equal to 4. Now the
Rahul, therefore Rahul's age is 5x is equal to 5 into 4 is equal to 20 years. Therefore, Harun's age is 7x, means 7 into 4. That will be 28 years. After 4 years there, we can check this also. After 4 years, Rahul's age 5x plus 4 plus 7x plus 4 is 5 into 4 plus 4, 7x is 28 plus 4, 5 into 4, 20 plus 4 plus 10th question. The number of boys and girls in a class in the ratio 7 to 5. एक क्लास में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है 7 to 5. The number of boys is 8 more than the number of girls. बॉयज जो है वो लड़कियों से 8 ज्यादा है, 8 नंबर्स. What is the total class strength? तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स मिला. So let me solve this question. Since the ratio of boys and girls in the class is 7:5. Let the number of boys are therefore 7x, because ratio is boys to girls 7 to 5, and the number of girls are 5x. According to the question, the number of boys is 8 more than the number of girls. Therefore, 7x is equal to number of girls 5x plus 8, because 8 more than the girls. Number of boys are 8 more than the girls. Therefore, 7x 5x is transforming to LHS side. 7x minus 5x is equal to 8. Therefore, 2x is equal to 8. Therefore, x is equal to 8 upon 2. Therefore, x is equal to 2 under 2. 2 fours are 8. X is equal to 4. 4. Number
of girls is equal to 5x, that is 5 into 4, and it will be 5 4 are 20. We can check this. 8 more than the girls are number of boys. And number of boys are 28, girls are 20. What is the total class strength? Therefore, the total class strength is equal to number of boys plus number of girls, means 28 plus 20, 48. 11th question. Baichang's father is 26 years younger than Baichang. Baichang's grandfather. यानी बाईचंग्स के पिताजी 26 इयर्स छोटे हैं बाईचंग्स के दादाजी से, एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाईचंग, और बाईचंग से 29 इयर्स बड़े हैं. यहाँ पर बाईचंग की एज हमें पता नहीं है. लेट इट बी एक्स, देन बाईचंग्स फादर एज विल बी एक्स प्लस 29 इयर्स, क्योंकि उसके पिताजी उससे 29 साल बड़े हैं और दादाजी बाईचंग के पिताजी से 26 इयर्स बड़े हैं. तो दादाजी की उम्र क्या रहेगी? x प्लस 29 प्लस 26. द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 इयर्स. तीनों की एजेस मिला के 135 इयर्स है. एक की भी एज हमें पता नहीं है, तीनों की एजेस कितनी है टोटल वो पता है. और what is the age of each one of them? तो हर एक की एज क्या होगी? Let the Baichang's age be x years. Therefore, according to the question, Baichang's father age be Baichang's father age be x plus 29 years. It is given. And Baichang's grandfather is 26 years older than his father. Therefore, Baichang's grandfather age be x plus 29 plus 26 years. Sum of the ages of all the three is 135 years. X plus 29 plus x plus 29 plus 26 is equal to 135. तीनों की एज मिला के 135 इयर्स टोटल है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. x plus x plus x is equal to 3x.
29 plus 29 plus 26. ये बाईचंद की एज है, ये बाईचंद के पिताजी की उम्र है, एज है, ये बाईचंद के दादाजी की एज है. Is equal to 135 years. Now we will add 29 plus 29 plus 26. 9 plus 9, 18. 18 plus 6 is 24. 2 plus 2, 4 plus 2, 6. 6 plus 2 is 8. Therefore, 3x plus 84 is equal to 135 years. This 84 will go to right hand side. And we will subtract 84 from 135. Therefore, 3x is equal to 135 minus 84. Now we will subtract 84 from 135. 5 minus 4 is 1. 13 minus 8 is 5. Therefore, 3x is equal to 51.